Dear students, welcome to my channel. In this video, we shall discuss your chapter number 5, Nouns, Gender. Now, as we know, there are four genders in English grammar. They are masculine gender, feminine gender, common gender, and neuter gender. Now, what do you mean by gender in nouns? Gender in nouns will help us identify whether the naming word of a person, place, animal, or thing is of male gender or feminine gender or belongs to both male and female gender or is of neuter gender. Okay. Now, how do we identify? A noun that denotes a male person or animal is said to be of the masculine gender. Male person or animal, masculine. Masculine M, male M. This is how you will remember. For example, man, gander, hare, tiger, grandfather, etc. A noun that denotes a female person or animal is said to be of the feminine gender. For example, man, masculine, woman, feminine. Gander, male, goose, feminine. Hare, male, heiress, feminine. Tiger, male, tigress, feminine. Grandfather, masculine, grandmother, feminine. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. That means जो noun मेल या फीमेल दोनों को समझाता है उसे हम कॉमन जेंडर मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट. नाउ पेरेंट में मदर भी आते हैं, फादर भी आते हैं. चाइल्ड में बॉय भी आता है, गर्ल भी आता है. फ्रेंड में फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है, मेल फ्रेंड भी हो सकता है. प्यूपल में मेल प्यूपल भी हो सकता है, फीमेल प्यूपल भी हो सकता है. सिमिलरली सर्वेंट, thief, enemy, cousin, person, orphan, student, baby, monarch, neighbor, infant, etc. इन सबको जब हम बोलते हैं तो हम समझते हैं कि दिस कैन आइदर बी अ मेल और अ फीमेल. दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर योर कॉमन जेंडर. नाउ अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग. जो नाउन एक थिंग को डिनोट करता है जो कि नाइदर अ मेल और अ फीमेल है, दैट मीन्स विदाउट लाइफ है, दैट मीन्स इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, इट इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर. तो जब भी आपका नाउन कोई नॉन लिविंग थिंग है और डिनोट करता है कोई चीज जो कि ना तो मेल है ना फीमेल है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, रूम, वुड, एक्सेट्रा. Now, collective nouns are considered to be of the neuter gender. आपको ये ध्यान में रखना है कि collective nouns जो है वो neuter gender में है. Collective nouns मतलब a collection of things is called a collective noun. Now, fill in each blank with a suitable feminine noun. The host and the hostess. हमें male वाला दिया गया है. Masculine gender is given. We have to fill up the feminine gender in the blanks here. So, host का होगा hostess. The steward and the stewardess. स्टूवर्ड का होगा स्टूवर्डेस. लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन द प्लेन. नेक्स्ट, माय अंकल एंड आंट. अंकल का फेमिनाइन है आंट. द किंग एंड द क्वीन हैड टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल. किंग का हुआ क्वीन एंड बॉय का हुआ गर्ल. द प्रिंस वाज 8. प्रिंस का फेमिनाइन होगा प्रिंसेस एंड द प्रिंसेस वाज 5. लेडीज and gentlemen, welcome to our party this evening. Okay, so this is how you will do this. Now, note, objects without life are often personified. That means they are spoken of as if they were living beings. We consider them as males or females. Objects without life को हम ऐसे समझते हैं कि either वो male है या female है. The masculine gender is often applied to objects remarkable for their strength and violence, as the sun. The sun shines brightly. Summer, winter, time, death, etc. इनको हम सब masculine gender की तरह हम समझते हैं. The feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for their beauty. अगर कोई भी आपका noun जो कि हम समझते हैं कि remarkable beauty है उसमें या fertility है या gentleness है and gracefulness है, ये सारे adjectives जो है we relate them with the feminine gender more. That is why things, nouns like your moon, the earth, spring, summer, nature, liberty, justice, mercy, peace, hope, charity, these all are referred to your feminine gender. ठीक है, basically these are all your objects without life
Okay, but we need to personify them when we speak. So few, depending on the characteristics of their, whether they have a few feminine characteristics or a few male characters, like the sun is known for its strength. Okay, therefore it comes under masculine gender. But things like spring, autumn, these are all, they exhibit traits of gentleness and gracefulness, and therefore they come under feminine gender. For example, a ship is often spoken of as she. जब भी हम शिप वाला नाउन यूज करते हैं तो हम उसको फेमिनाइन जेंडर में कंसिडर करते हैं. These are a few things which you need to keep in mind. Now we will identify the gender of the underlined words. जो underlined words है उसका gender हम identify करेंगे. And masculine के लिए M लिखेंगे, feminine के लिए F लिखेंगे, common के लिए C and N for neuter gender. The lion is a dangerous animal. Lion masculine, animal common gender. This hero is my favorite. Hero masculine. ठीक है. Man works very hard for his family. Man masculine, family is your common gender. Arpita attached a couple of planks of wood to the wall for shelves. अब wood जो है नॉन लिविंग है, इसलिए ये आता है न्यूटर जेंडर में. Girls usually like pink color. Girls feminine gender. A queen works a lot to serve poor people. Queen feminine. People will be your common gender, क्योंकि people के नीचे आपके मेल भी आ सकते हैं and female भी आ सकते हैं. We are four friends in our group. Now friends can be male and feminine both, so it comes under common gender. My cousin will come tomorrow to visit our factory. Factory is a neuter gender. Cousin is your common gender. Next, workers are doing great job for the company. Workers can be both male and female. So it is your common gender. Company will be your collective noun. I need a pen to sign this document. Now, pen is your non-living thing, so it is a neuter gender. Document is also neuter gender. Now, learning time, there are certain rules to form feminine nouns from masculine nouns. जब आपका masculine noun दिया गया है, जैसे fox, bachelor, stallion, king, drake, monk, buck and groom, ऐसे सब नाउन मेल नाउन्स के फेमिनाइन जो है एक एंटायरली डिफरेंट वर्ड आता है. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेमोराइज दिस. ओके, देयर इज नो ट्रिक टू रिमेम्बर दिस. देयर आर सम मेल नाउन्स जिनका फीमेल बिल्कुल उनसे अलग होता है. जैसे फॉक्स का हो जाता है विक्सन, बैचलर बिकम्स स्पिंस्टर, स्टैलियन बिकम्स मेयर, किंग बिकम्स क्वीन, ड्रेक बिकम्स डक, monk becomes nun, buck becomes doe, and groom becomes bride. Now, another rule for changing masculine to feminine is by adding ess. Count becomes countess. Heir becomes heiress. Lion becomes lioness. Host becomes hostess. Steward becomes stewardess. Shepherd becomes shepherdess. You have to learn this by heart. Now, there are certain male nouns in which you will have to add ess or ix after dropping the vowel of the masculine ending word. ठीक है, अब देखिए एम्परर. एम्परर में आपको क्या करना है, आपको ड्रॉप करना है वॉवल ऑफ द मैस्कुलाइन एंडिंग. ठीक है, तो ये बन जाता है, वॉवल कहां पर आया, एम, एम्परर बन जाता है एम्प्रेस. वेटर becomes waitress. You have dropped e over here and made it waitress. Okay, you have dropped e over here in emperor and made it empress. ठीक है. Now, वैसे ही टाइगर में आप ई वाला वॉवल ड्रॉप करके उसको टाइग्रेस कर देंगे. गवर्नर को आप ओ वाला वॉवल ड्रॉप करके गवर्नेस कर देंगे. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स. गवर्नर का ओ जो वॉवल है उसको आप ड्रॉप करेंगे एंड उसमें ई एस एस ऐड करेंगे. नाउ बाय एडिंग अ वर्ड टू द फेमिनाइन नाउन.
मिल्क मैन बिकम्स मिल्क मेड, मैन का मेड बन गया, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर बन गया। अब देखिए, डोंट कंफ्यूज मिल्क मैन विथ मिल्क वुमन, इट विल बी मिल्क मैन एंड मिल्क मेड, दिस यू हैव टू रिमेंबर। स्टेप सन becomes step daughter, fisherman becomes fisher woman, landlord becomes landlady, peacock becomes feminine peahen. So what you have to do, children, is you have to memorize this. Okay. Now, practice time. Underline the common gender and circle the neuter gender. Common gender मतलब जिसके नीचे both male and female आते हैं. Neuter gender जो आपका नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है। द टीचर आस्क्ड मिस किटी टू रिसाइट अ पोएम। टीचर इज योर कॉमन जेंडर, पोएम इज योर न्यूटर जेंडर। माय कजन कैन बी फीमेल एंड मेल बोथ, सो कॉमन जेंडर। बॉट मी अ ड्रेस, ड्रेस इज अ नॉन लिविंग थिंग, so it is neuter gender. The child wanted a balloon. The child is your, can be a male child or a female child. Common gender, wanted a balloon. Balloon is the your neuter gender. Cousins welcomed all the guests. The cousins can be both male and female, and guests can also be male and female. So cousins and guests both are your common gender. All the pupils wished the teacher and presented her a gift. Pupils can be both male students and female pupils, and therefore it comes under common gender. Gifted, presented her a gift. Gift is your neuter gender. The shopkeeper did not have enough stationery. The shopkeeper did not have enough stationery. Shopkeeper can be common gender. Stationery will be your neuter gender. My father and I went to the restaurant. Restaurant is your neuter gender. His friend did not come to the party. Friend can be common gender. We could not hear the cry of the infant. Infant can be both a male or a female. ठीक है. So this comes under your common gender. We could not hear the cry of the, now we also comes under common gender. The monarch sat on the throne. Monarch is your male gender. Sat on the throne is your neuter gender. Now, learning time. When the noun changes from masculine to feminine, the pronoun and the possessive adjective in the sentence must change too. Example के साथ में समझते हैं. देखिए, जैसे the king went to the palace, he ate his breakfast. यहाँ पर noun जो है king, वो change हो रहा है queen को. तो ये क्या बोलता है? That the pronoun and the possessive adjective in the sentence must change too. तो यहाँ पर king के लिए आपका हुआ pronoun he, तो queen के लिए ये pronoun क्या हो जाएगा? she हो जाएगा. ठीक है। वैसे ही पोजेसिव एडजेक्टिव किंग के लिए हिज है, तो क्वीन के लिए हो जाएगा हर. दिस इज व्हाट दिस रूल मीन्स. ओके. हिज अंकल हैज अ कार. हिज अंकल, अब हिज जो प्रोनाउन है बन जाता है हर फेमिनाइन जेंडर में, और अंकल बन जाता है आंट. ही गोज टू ऑफिस इन हिज कार. ही बन जाएगा शी. गोज टू ऑफिस इन हिज कार तो नहीं होगा, शी गोज टू ऑफिस इन हर कार हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर के लिए. द फादर लव्ड द एल्डेस्ट सन वेरी मच. फादर बिकम्स मदर, सन बिकम्स डॉटर. ही लेफ्ट हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी. अब फादर के लिए जो प्रोनाउन ही है, मदर के लिए वो प्रोनाउन बन जाता है शी. ही लेफ्ट हिम. सन के लिए हिम प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो डॉटर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? डॉटर के लिए हर यूज होगा. ऑल हिज प्रॉपर्टी, फादर के लिए ऑल हिज प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, तो मदर के लिए ऑल हर प्रॉपर्टी हो जाएगा. हिज ब्रदर इज एन एक्टर. हर सिस्टर इज एन एक्ट्रेस. हिज बन जाता है हर, ब्रदर बन जाता है सिस्टर, एंड एक्टर बन जाता है एक्ट्रेस. Her sister is an actress. He always plays the part of a hero in a film. He है तो यहाँ पर she बन जाएगा. Plays the part of a hero in a film. She plays the part of a heroine in a film. Rewrite the following sentences choosing the right word. Her
वाइफ तो नहीं होगा ना, हर हस्बैंड होगा, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे हर है तो यहाँ पर हर हस्बैंड ट्रीटेड हर काइंडली। द किंग और क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड, आप पहले देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस में हर है, तो किंग होगा या क्वीन होगा, क्वीन होगा। कमला फेल्ट हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ her or his daughter. Kamala is a feminine noun. So it will be in the presence of, and यहाँ पर daughter है. So यहाँ पर in the presence of her daughter. His, यहाँ पर his pronoun, ठीक है, is an actor. Actor मतलब मेल जेंडर होना चाहिए, इसलिए ब्रदर होगा. And always plays the part of the hero. Hero मतलब he होगा, ठीक है. अगर हीरोइन होता तो she always plays, and यहाँ पर सिस्टर होता, ठीक है, एंड यहाँ पर एक्ट्रेस बन जाता. नेक्स्ट, माई नेफ्यू और नीस इज अ डांसर एंड ही शी इज फेमस फॉर हर परफॉर्मेंस एज द्रौपदी. तो यहाँ पर हमें हिंट लेना है हर परफॉर्मेंस से. हर परफॉर्मेंस हुआ तो हमारा फेमिनाइन नाउन होगा नेफ्यू, एंड शी इज फेमस फॉर हर परफॉर्मेंस एज द्रौपदी. माई लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी इज वेरी काइंड, शी और ही हेल्प्स मी इन मेनी वेज. तो यहाँ पर देखिए, अगर आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, माई लैंडलॉर्ड यूज करेंगे तो आप ही यूज करेंगे, लैंड लेडी यूज करेंगे तो शी लिखेंगे. ओके. Mr. Gautam has been a careful steward of our events. Mr. Gautam is a male person, masculine gender. So we will use the male gender steward over here, masculine gender. The deer or doe was licking her infant. Her infant हो गया मतलब doe, जो कि feminine gender माना जाता है, ठीक है. अगर होता यहाँ पर कि the dash was licking his infant, the deer हो जाता, ठीक है. Now, rewrite the following sentences after changing the gender of the nouns. Make all other necessary changes. My nephew will be meeting a countess this afternoon. Nephew बन जाता है niece, will be meeting a count this afternoon. The priest blessed the prince. The priestess blessed the princess. The duke called the young man into his office. The duchess called the young woman into her office. His भी आपका change होगा to her. My aunt is a widow and her brother is a bachelor. अब देखिए, my aunt बन जाता है uncle is a widower and his sister is a bachelorette. ठीक है. The wizard transformed the little boy into a peacock. Wizard becomes witch, transformed the little girl into a peahen. So this is how you will attempt this exercise. With this, we come to the end of your chapter, gender, nouns. And if you have any doubts, please let me know in the comment section. And like, share, and subscribe. Keep the notification button on for future videos. And if you want videos on any topics, please let me know in the comment section. In my channel's playlist, there are a lot of videos related to English, Hindi, maths, EVS, and computers. Please go through them and let me know what other videos you would like to see videos on. Thank you, students, and all the best.